स्टूडेंट्स मुझसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हमारे बॉडी में इतने सारे नर्व्स, हम हर मसल की इंडिविजुअल नर्व सप्लाई कैसे याद रखें? तो इसके लिए एक ट्रिक है। अगर एग्जाम में एमसीक्यूज में आपका कोई क्वेश्चन आता है कि दिस पर्टिकुलर मसल इज सप्लाइड बाय विच नर्व, तो सबसे पहले आपको यह सोचना है कि कहीं वो पर्टिकुलर मसल फेरिंजियल एपरेटस की मसल तो नहीं है। अगर वो फेरिंजियल एपरेटस की मसल होगी तो हम फेरिंजियल एपरेटस वाला लॉ लगाएंगे, जिसको हम फेरिंजियल एपरेटस एम्ब्रियोलॉजी के वीडियो में देखेंगे। लेकिन अगर मान लो वो मसल फेरिंजियल एपरेटस की नहीं है, तो नेक्स्ट ट्रिक है हमारा हिल्टन लॉ। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, जो नर्व जहां रहती है, जहां बहती है, वहां के मसल्स को सप्लाई करती है। जैसे कि द नर्व ऑफ द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म इज, यस, that is a musculocutaneous nerve. So the musculocutaneous nerve will supply all the muscles of the anterior compartment. So the biceps, brachialis, coracobrachialis. Do you remember the trick? BBC. Biceps, brachialis, coracobrachialis. These all the three muscles of the anterior compartment. They are supplied by the nerve of the anterior compartment. That is the musculocutaneous nerve. And in the same way, the nerve of the posterior compartment is the radial nerve. So all the muscles of the posterior compartment, that is the triceps. Yes, all the heads of the triceps are supplied by the nerve of the posterior compartment, that is the radial nerve. Now in the same way, apply the rule for the forearm. Yes, in the previous video we have seen, yes, these all are the muscles of the forearm. तो आपको पता है, जैसे जब हम डिसेक्शन करते हैं तो एंटीरियर कंपार्टमेंट में डिसेक्शन करते हैं तो ये सारे मसल्स दिखते हैं, जिसको हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। जो स्टूडेंट्स पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले पुराने वीडियोस देख लें, तब उनको ये सारी चीजें समझ में आ पाएंगी। यस, अगेन कम टू द सेम पॉइंट। अगर ये एंटीरियर कंपार्टमेंट ये सारे मसल्स हैं तो डिसेक्शन के टाइम में एंटीरियर कंपार्टमेंट में कौन कौन सी नर्व मिलती है? यस, टू नर्व्स। थ्रू द थिनर एमिनेस द नर्व वाज द मीडियन नर्व, व्हाइल थ्रू द हाइपोथेनर द नर्व वाज द अल्नर नर्व। सो यस, as in the previous video we have seen there are the 5 superficial muscles and 3 deep muscles. So yes, these all nerve will be supplied by either by the median nerve or by the ulnar nerve. Okay, so yes, total there are the 8 muscles. This is the calculation for the nerve supply. Total there are the 8 muscles, in which the 6.5 they are supplied by the main nerve of the anterior compartment, that is the median nerve, while the only 1.5 muscle is supplied by the ulnar nerve. Okay, yes, can you see? क्या आपको याद है मुझे? Yes, ये जो अल्नर साइड था यहाँ पर कौन सी मसल थी? फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस। और ये अल्नर साइड में कौन सी मसल लाई कर रही थी? मीडियल हाफ ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। यस, these two muscles, U for ulnaris, U for ulnar nerve. This muscle, flexor carpi ulnaris, and do you remember the flexor digitorum profundus, which was the hybrid muscle? Yes, it was having the lateral half and the medial half. Yes, the lateral half is supplied by the medial nerve, while the medial half is supplied by the ulnar nerve. Okay, so yes, this one and this half, these are supplied by the ulnar nerve. Okay, so this is the calculation of the muscles along with the ulnar nerve, along with the yes nerve supply. तो एग्जाम में अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द नर्व सप्लाई टू पामिस लॉन्गस, तो आप हमको कंफ्यूज नहीं होना है, अरे यार मैं इतने सारे मसल की नर्व सप्लाई हर एक की कैसे याद रखूं। नहीं, आपको रूल अप्लाई करना है। यस, व्हाट इज द रूल? यस, पामिस लॉन्गस इट इज द मसल ऑफ द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोरआर्म, सो दिस शुड बी सप्लाइड आइदर बाय द मीडियन नर्व एंड और द अल्नर नर्व। Only ulnar side muscle, which are the ulnar side muscle? Flexor carpi ulnaris and medial half of the flexor digitorum profundus. They are on the ulnar side. So these 1.5 muscle will be supplied by the ulnar nerve. Remaining all the muscles will be supplied by the median nerve. So after this view, after this concept, you will recall that palmaris longus definitely it is not on the ulnar side, so it must be supplied by the median nerve. So this is your answer. Okay, yes, and do you remember that the posterior compartment here only one nerve is found, that is the radial nerve. So any muscle is asked in your MCQ. Suppose in exam the question is coming, what is the nerve supply of the extensor digitorum? तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, अरे यार एक्सटेंसर डिजिटोरम की नर्व सप्लाई कौन सी? कंफ्यूजन नहीं, हमको ये याद करना है, एक्सटेंसर डिजिटोरम, यस, इट इज द मसल ऑफ द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोरआर्म, yes, so it must be supplied by the nerve of the posterior compartment of the forearm, that is the radial nerve.
सो इट इज योर आंसर। ओके, और मैंने आपको एक और कॉन्सेप्ट बताया था। यस, व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट? दैट मीडियन नर्व की डीप ब्रांच। यस, व्हाट आई एम टेलिंग यू, मीडियन नर्व। यस, हियर यू कैन सी मीडियन नर्व डीप branch which is known as the anterior interosseous nerve, MCQ, while the radial nerve deep branch, this is known as the posterior interosseous nerve. Okay, so one more thing, all the deep muscles of the forearm on anterior side or flexor compartment, they are supplied by the median nerve, but better answer is the anterior interosseous nerve. Again, this is the very important fact. Remember, all the deep muscles of the anterior compartment of the forearm, they are supplied by the anterior interosseous nerve. This is the best answer. If it is not given, then you will opt the median nerve. Such kind of the questions are generally asked in the MCQs exam. Okay, except this is the MCQ. Except, again one more MCQ. Except the medial half of the flexor digitorum profundus. It is not supplied by the anterior interosseous nerve or the median nerve, but it is supplied by the, your answer is ulnar nerve. That's why this is the example of the composite or the hybrid muscle which is supplied by the dual nerves. Okay, so yes, this is the calculation of all the muscles, 5 superficial, 3 deep muscles of the anterior compartment, while the 7 superficial and the 5 deep muscles of the posterior compartment, these all are supplied by the radial nerve. Okay, so yes, this is the notes for the nerve supply of the various muscles of the forearm. Thank you very much. आप ये सारे वीडियोस ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। ओके, और आपके स्टिमुलेशन से अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे तो मुझको भी स्टिमुलेशन मिलेगी और मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आपके लिए अपलोड करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।